शाम होते होते ही गुजरात के वडोदरा शहर में होटल, रेस्टोरेंट और ठेलों पर लोगों की भीड़ जमी हुई देखने मिलती है। लेकिन ऐसे ही लोगों के लिए ये खास खबर सामने आई है, जहां एक बड़े रेस्टोरेंट में खाने से कीड़ा निकला है। गुजरात के वडोदरा शहर में स्वाद प्रिय जनता के लिए तरह तरह की होटल और रेस्टोरेंट कार्यरत है, लेकिन कई जगह अनहाइजीनिक तरीके से खाना बनाए जाने पर खाने में कीड़े निकलने की घटनाएं भी कई बार सामने आती रहती है। वडोदरा के नीलांबर सर्कल पर नीलांबर त्रिम्फ मॉल में वॉक ऑन फायर रेस्टोरेंट है, जिसके खाने में कीड़ा निकलने पर ग्राहक द्वारा आपत्ति जताई गई, लेकिन वॉक ऑन फायर प्रबंधन ने इसे कीड़ा होने की बात मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में कस्टमर ने फूड एंड ड्रग्स विभाग में शिकायत तक की बात कही है। અમે લોકોએ ઓર્ડર કર્યો હતો, અમે પ્યોર વેજીટેરિયન છે। મેં એમને ઓર્ડર કરતા પહેલા જ ઇન્ફોર્મ કર્યું કે અમે પ્યોર વેજીટેરિયન છે। એમને કીધું ઓકે મેમ, અને અમે ઓર્ડર કર્યો। મારી ડોટર માટે સ્પેશિયલ લેસ સ્પાઇસી પનીર ચીલી મંગાવ્યું અને એની ફૂડમાંથી કોક્રોચ નીકળ્યો। મેં એમને બતાવ્યું અને એમને મને એવું કીધું કે આ કોક્રોચ નથી, મસરી નાખ્યો અને લઈ ગયા। પછી મેં એમને કીધું કે ફૂડ એન્ડ ડ્રગમાં કમ્પ્લેન કરું છું, તો એમને મને એવું કીધું કે આ એડિબલ વસ્તુ છે, એ મોડા સુધી લઈ ગયા, એમને ખાધું નહીં અને એમને મને કીધું આ વેજ છે। ને મેં એમને કીધું છે કે વેજ વાળાને નોનવેજ અને વેજનો ડિફરન્ટ 100% ખબર પડે છે। એ લોકો એક્સેપ્ટ નથી કર્યું કે આ એમના અંદરથી નીકળ્યું છે।